રાજ્યભરમાં ઠંડીનું જોર યથાવત. અમદાવાદમાં સામાન્ય પારો ઉચકાયો. લઘુત્તમ તાપમાન 16.2 ડિગ્રી નોંધાયું. પવનની ગતિ વધતા હાડ થીજવતી ઠંડીનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. રાજ્યમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી ઘટી શકે તેવી શક્યતાઓ સેવવામાં આવી રહી છે. તો આગામી 5 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે તેવી હવામાન વિભાગની ધારણા છે. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 16.2 ડિગ્રી નોંધાયું. જ્યારે ગાંધીનગરની જો વાત કરીએ, ગાંધીનગરમાં 15, રાજકોટમાં 15.1 ડિગ્રી તાપમાન કે જ્યારે પાલનપુર અને ડીસામાં 15.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. મહેસાણા અને પાટણમાં 15.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. તો વડોદરામાં 17, ભાવનગરમાં 18 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. સુરતની જો વાત કરવામાં આવે તો સુરતમાં 19 ડિગ્રી, ગીર સોમનાથમાં 18.5 ડિગ્રી તાપમાન, તો કચ્છનું નલિયા 12 ડિગ્રી તાપમાન સાથે રાજ્યનું સૌથી ઠંડુગાર શહેર બન્યું હતું. આગામી સમયમાં હજી પણ ठंडी વધે તેવી શક્યતાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ये ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है और उसके बाद का जो दिन है उसमें टेम्परेचर नोला चेंज में रहेगा. और मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए तो अहमदाबाद का 16.2 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर का 16.3 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ. और मिनिमम टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करेंगे तो अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों जगह के लिए 17 डिग्री सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट है. और सब ओवरऑल गुजरात स्टेट की बात करेंगे तो जहां पर मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम रिकॉर्ड हुआ है वो नलिया 12 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है. सर अभी ये ठंड आपने बोला तापमान बढ़ने की संभावना किस वजह से, अभी कहाँ से वो तापमान गिरा है? अभी जो विंड प्रिवेल करेगी वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगी जिसके कारण मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में आने वाले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज होगी. उसके बाद जो विंड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड की डायरेक्शन रहेगी जिसके कारण टेम्परेचर उसके बाद के दिनों में 9 लाख चेंज में रहेगा. सर रीजन क्या है ये बढ़ोतरी होने का? जो इसमें विंड का रोल ज़्यादा होता है कि विंड किस मतलब एरिया से गुजर रही है. इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्ली टू ईस्टर्ली विंड है वो ज़्यादातर विंड या तो एमपी और अरेबियन सी साइड से आती है जिसके कारण अपर लेवल में हल्का सा मॉइस्चर रहता है जिसके कारण मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी. अभी तो सिस्टम वगैरह साइक्लोन वगैरह सब कुछ है? नहीं, अभी कोई वैसा सिस्टम नहीं है. બ્યુરો રિપોર્ટ CN24 ન્યૂઝ. હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.